Okay, our next topic is the application of microbiology in the agriculture. Now, to understand this topic, please understand the heading. Now, what is the heading? What is the topic given in your UPSC main syllabus of paper 1, chapter 1? Is the application of microbiology in the agriculture. Okay, whatever the microbes are there, what is their application in the agriculture? Okay, whatever the agriculture we have in that, what is the role of a microbes? That is the topic given in the UPSC main syllabus. So you have to give the exact microbiological applications in the agriculture. Okay, and for this topic we have to go through the many subtopics, and all these subtopics are very important from the UPSC mains examination point of view. That's because the agriculture is always the burning issue in the societies. Okay, and for the improvement of the agriculture there is a constant efforts laid down by the governments. Okay, and that is why this topic becomes very important, that how we can use the microbes in the field of agriculture. All right, so let us see the topic. See, this is the first chapter of the UPSC main syllabus of paper 1, that is the structure and reproduction or multiplication in the viruses. We have completed it. Then viroids, bacteria, fungi and mycoplasma. All this portion is completed. Now we are going to see the application of microbiology in the agriculture. Okay, agriculture में क्या application है microbiology का, ये हमें study करना है through this lecture. Okay, now let us consider. Now see the microbes. Now when we say microbes, okay, जब हम microbes कहते हैं तो उसके अंदर कौन कौन आता है? ठीक है, माइक्रोब्स का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होता है. देखिए, माइक्रोब्स जनरली ये जो वर्ड है यूज किया जाता है फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, मतलब वो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. समटाइम्स द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर बट द स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ओके, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं लेकिन बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म. सो जनरली माइक्रोब मीन द वन विच इज स्मॉलर. ओके, जो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में माइक्रोब्स जो वर्ड यूज किया जाता है. सो माइक्रोब्स इंक्लूड्स द फंगाई as well as bacteria, because in the fungi we find the yeast which is unicellular, right? Then the bacteria, all the bacteria are unicellular. Then the algae, many algae are the unicellular algae, right? Many of these microbes are beneficial for the agriculture. Okay, right? Fungi is beneficial to the agriculture. There are many bacteria which are beneficial to the agriculture. There are algae which increase the crop yield. There are some viruses which control the diseases in the plants. Okay, so all these microbes show some or other kind of the advantages for the agriculture. Okay, for example, see the soil microbes like bacteria and fungi are essential for decomposing the organic matter and recycling the old plant material. Okay, generally we see below the plant, see, observe, this is a plant, and if you observe at the ground, there are many dead material which is coming from this plant and it is landing on the ground. Okay, all this dead material cannot be directly reused by these plants, but the bacteria and fungi starts to decompose this particular dead material and convert this dead material into the simpler compounds. And due to the conversion of these complex chemical compounds into the simpler compounds, these simpler compounds can be reused by the plants. Okay, so the recycling of the old plant material is attributed to the bacteria and the fungi. So bacteria and fungi are the microbes and they are constantly recycling the old plant material and making it available to the plants again. So they play a very crucial role in the ecosystem as well as in the agricultural fields. Okay, so you can यहाँ पे आप जज कर सकते हो कि कैसे बैक्टीरिया और फंगाई ऑलरेडी नेचर के लिए, इकोसिस्टम के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन ये तो एक जनरलाइज बात हो गई, ये तो जनरलाइजेशन है जो हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया और फंगाई रिसाइकलिंग करते हैं. उसमें हमें स्पेशल केसेस देखनी पड़ेंगी जो हमें यूपीएससी मेंस में पुट फॉरवर्ड करते आनी चाहिए एज ए एग्जांपल दैट हाउ द माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड इन द एग्रीकल्चर. Now see, some of the commonly promoted and used the beneficial microorganism in the agriculture worldwide includes the Rhizobia. Okay, Rhizobia. Then the Mycorrhizae, we have studied about the Mycorrhizae. It's a fungal association with the roots of the higher plant. Then Azospirillum, Bacillus pseudomonas, Trichoderma, Streptomyces species, and many more. Okay, all these microorganisms are promoted as a beneficial for the agricultural use. Are worldwide constantly used for the improvement in the agricultural production. Okay, now let us see the particular example. Now see how the microbes are useful for the agriculture. The very first application microbes show is they act as a biocontrol agent. Okay, the microbes in the agricultural field, they act as a biocontrol agent. See the example of the microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control the butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis. Okay, now see the Bacillus thuringiensis, often it is written as a BT, and you must have heard about the BT cotton. Okay, it is relating with this topic. Okay, now see the butterfly caterpillar
को कंट्रोल करने के लिए बैसिलस thuringiensis इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। Now as you know, Bacillus thuringiensis is a typical prokaryote. It's a bacterium, it's a microbe, and it is used to control the butterfly population in the agricultural field. Okay, now see the butterfly caterpillars you can observe in this particular picture. These are constantly feeding on the plant sap. Okay, they constantly use the plant sap for their growth and development, and hence they reduce the plant productivity. Whatever the yield is going to occur there, this is greatly reduced by these butterfly caterpillars. So it is essential to stop these butterfly caterpillar or minimize their population to the certain level that it should not affect our crop productivity. Okay, so to control the butterfly caterpillars population, we use the bacteria that is called the Bacillus thuringiensis. Now one can say how the Bacillus thuringiensis, which is a bacteria or the prokaryote, is able to control the population of butterfly caterpillars, right? Now see, what is the exact mechanism which is used by the Bacillus thuringiensis to kill the butterfly caterpillars? Now these Bacillus thuringiensis were available in the markets actually as a packets of the dried spores. Okay, dried spores के फॉर्म में ये Bacillus thuringiensis के जो पैकेट्स है ये मार्केट्स में अवेलेबल है. Now they mix with the water and spread onto the vulnerable plants such as the brassicas and the fruit trees. ओके ये ड्राइड स्पोर्स को लाया जाता है, उनको वाटर में मिक्स किया जाता है. व्हेन वी मिक्स इट टू द वाटर एंड दिस Bacillus thuringiensis water is sprayed on the vulnerable plants such as the brassicas and the fruit trees, where these insects are where these are eaten by the insect larvae. Okay, whatever the insect larvae is there, whatever the butterfly caterpillar is there, they eat these dried spores of the Bacillus thuringiensis. Now see, when they eat the spores of the Bacillus thuringiensis, in the gut of the larva, the toxin is released by these spores. Okay, so Bacillus thuringiensis once reach into the gut of the butterfly caterpillar, they release the toxins which are produced, which are already present in the Bacillus thuringiensis body. Okay, so toxins are released in the gut of the larva and larva gets killed. Okay, so here why the larva is getting killed? Because it has consumed the BT, that is Bacillus thuringiensis, the spores of Bacillus thuringiensis. Now when it eats the Bacillus thuringiensis, inside its gut the particular type of toxin is produced, and due to this toxin this larva is got killed. Okay, now see, the bacterial disease will kill the caterpillars but leave the other insect unharmed. See, this is the advantage of using the Bacillus thuringiensis, that is Bacillus thuringiensis will kill only the caterpillars, not the other insects which are helpful in the pollination. Okay, as you know, the pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma, and this pollination is absolutely required for the creation of fruits, right? So other pollinators must be saved from this Bacillus thuringiensis. So Bacillus thuringiensis has this particular ability to kill only the caterpillars. When they reach to the gut of these caterpillars, they release a particular type of toxin, and after producing the toxin, the caterpillars die. And in this way, we can save the yield of the fruit trees or the brassicas by spraying the dried spores of the Bacillus thuringiensis mixed with the water, right? After spraying, if the larva starts to eat the plant, it will indirectly consume the Bacillus thuringiensis, and due to the consumption of Bacillus thuringiensis, it got killed. Okay, now see, it happens like that. See, this is a plant, and on this plant there is a कैटरपिलर. ओके, ऑन दिस प्लांट यहाँ पे एक कैटरपिलर है और इसे कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहा है. अब जबकि इस पे स्प्रेइंग नहीं है बैसिलस thuringiensis का, तो वो कितना भी कंज्यूम कर सकता है. नाउ व्हेंस वी स्प्रेड द बैसिलस thuringiensis dried spores mixed with the water on these plants, now the Bacillus thuringiensis bacteria is everywhere on the plant. Okay, now when this caterpillar consume these leaves, on these leaves there is a spores of the Bacillus thuringiensis. So indirectly the Bacillus thuringiensis is eaten by these larva or the caterpillar, and after reaching into the gut of the caterpillar dies due to the consumption of Bacillus thuringiensis. Okay, so this is how we can use the Bacillus thuringiensis to save our agricultural fields from the caterpillars. Okay, now see, because of the development of the methods of the genetic engineering, now see, we will take the introduction of the BT cotton. Okay, because this is a important topic always for the UPSC mains examination, let's take the introduction for this. Okay, now see, due to the development of the methods in the genetic engineering, scientists introduced the Bacillus thuringiensis toxin gene into the plant. देखिए, पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे कि अगर कैटरपिलर को रोकना है तो मार्केट में जाके ड्राइड स्पोर लेके आते थे.
ठीक है, मार्केट में जाके ड्राइड स्पोर जब लेके आ गए तो इन ड्राइड स्पोर को वाटर में मिक्स कर दिया, और वाटर में मिक्स करने के बाद में फिर प्लांट पे ऐसे स्प्रे कर दिया, फिर जैसे कैटरपिलर उसको खाएगा तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ पहले करना पड़ता था ना। वो ड्यू टू द advancement in the genetic engineering, what we have achieved today is the amazing thing that the whatever the gene which is present in the Bacillus thuringiensis, which produces the toxin. Due to this toxin, the butterflies, the caterpillar got killed, right? Now, whatever the gene which is responsible for producing this toxin, this gene is directly introduced into the cotton plant. Okay? So, this gene which produces the particular toxin in the Bacillus thuringiensis, this gene from the Bacillus thuringiensis is now introduced into the cotton plant, and now this cotton plant is called as the BT cotton, that is Bacillus thuringiensis cotton. Okay, now we don't have to take the dried spores from the market now. Now what the cotton plant is doing, the cotton plant having the gene of Bacillus thuringiensis produces the toxin in their leaves automatically, because this gene is expressing in the Bacillus in the cotton plant now. Now cotton plant is producing that toxin, is already present in the leaves of the cotton. Okay, and due to the presence of the poison in the leaves of the cotton, whenever the caterpillar try to eat these leaves, the caterpillar die. Okay, so now we don't have to collect the dried spores from the market and mix it with the water and spray this content on the plant. Just we have to purchase the BT cotton. Okay, once you have the BT cotton, no caterpillar can attack on this BT cotton, because it already has the toxin which is produced by the Bacillus thuringiensis. Right, now such a plant is resistance to the attack by the insect pest. Okay, BT cotton is one such a example. All right, so insect pest cannot attack on this particular plant because it shows the presence of toxin. And why it has a toxin? Because it possesses the gene which is present in the Bacillus thuringiensis, and this gene is transferred from the Bacillus thuringiensis to the cotton plant by using the methods of the genetic engineering. Okay, so very important topic to understand, and this topic is also covered in the GS as well. Okay, in your general studies preparation, this topic is also overlap there. Okay, तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीटी कॉटन जो है, यहाँ पे बैसिलस thuringiensis का जीन्स उसके बॉडी में डाल के यहाँ पे बीटी कॉटन बनाया गया है। ठीक है, और बीटी कॉटन जब बना है तो अब उस पे कोई इंसेक्ट लार्वा जो है उस पे फीड नहीं कर सकता है। नाउ सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस thuringiensis, ओके, देखिए सिर्फ कॉटन के लिए ही उसका एप्लीकेशन नहीं है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द कॉटन ओनली। नाउ सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस द प्रोटीन दैट कैन किल द अदर इंसेक्ट्स, certain insects such as the lepidopterans like tobacco budworms or armyworms, then coleopterans which are beetles, then dipterans which is flies and mosquitoes. So all these can be killed by using the Bacillus thuringiensis strains. Different types of strains of the Bacillus thuringiensis are available. So if you want to control the population of the armyworm or the tobacco budworm, we can use the particular type of strain. If you want to control the flies and the mosquito, we can use the other kind of strain of the Bacillus thuringiensis. So you can find there are many applications of this Bacillus thuringiensis in the agricultural field. According to the insect or the insect, we can use the particular strain of the Bacillus thuringiensis in order to control the population of that insect in our agricultural field, right? So that there is a no decrease in the agricultural productivity. Okay, now see. The Bacillus thuringiensis forms. What is the exact mechanism? Okay, how Bacillus thuringiensis is able to kill these caterpillars. Okay, now see, the Bacillus thuringiensis forms the crystals, protein crystals, during the particular phase of their growth. Okay, now see, when the Bacillus thuringiensis is growing, this is the bacteria. Okay, Bacillus thuringiensis क्या है? Bacteria, and you know all the structural features relating with the bacteria. Okay, we have studied bacteria in detail. Now this bacteria, during their growth, during their particular phase in their life cycle, they create the protein crystals. What they create is the protein crystals, and these protein crystals are created by these Bacillus thuringiensis during their particular phase of their growth. Now these crystals contain the toxic insecticidal proteins. Okay, now ये जो protein होता है ये insecticidal होता है, that means this protein has the ability to kill the insects. Okay, इस प्रोटीन के पास ये एबिलिटी होती है कि ये किल कर सके किसी भी इंसेक्ट को. ओके, नाउ सी द इवेंट एक्चुअली द बीटी कॉटन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट हाउ इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव. Okay, it is inactive protoxin. That means till it is present in the body of the Bacillus thuringiensis, it remains inactive. Okay, it's a protoxin. It remains inactive inside the body of the Bacillus thuringiensis. But once the insect ingests the inactive toxin,
Okay, but once this toxin is ingested by the insect, it got converted to its active form of toxin. Okay, so once inside in the gut of insect, this inactive protoxin got converted into the active toxin. Okay, it is getting converted into the active toxin due to the alkaline pH of the gut, because insect shows the alkaline pH of the gut, and these toxins got activated due to the pH of the gut of the insect, which solubilize the crystals, because the alkaline pH of the gut of the insect is responsible for the solubilizing the crystals and converting the inactive protoxin into the active toxin. Okay, so Bacillus thuringiensis on the one hand producing the protein crystals which has insecticidal properties, but it remain in an inactive protoxin form in the Bacillus thuringiensis. But once it is ingested in the insect body, in the insect body, the gut pH is alkaline, and due to the alkalinity of the gut pH, these crystals got converted into the active toxin. And when there is a active toxin, formation of the active toxin, the insect is got killed due to this toxin. Okay, so this is how the actual mechanism occurs, in which the insect is got killed by the Bacillus thuringiensis. Okay, now see, the activated toxin is binds to the surface of the midgut of the epithelial cells. Okay, if you have studied the insect in your graduation, you must have heard about their hindgut, midgut, and foregut. Okay, so there are three guts. In the midgut, the epithelial cells, these activated toxin binds there, okay, to the epithelial cells of the midgut and create the pores in these cells. Okay, so whatever the midgut is there of the insect, in the midgut of the insect, these toxins binds to the epithelial cells and create the pores in these epithelial cells, and due to this swelling occurs, and after the swelling there is a lysis of the cell. That means there is a death of the cells of the epithelial in the midgut of the insect, and eventually it causes the death of the insect. So this is how the exact mechanism occurs. When the inactive protoxin got converted into the toxin due to the alkalinity of the insect gut, in the midgut, this toxin directly binds to the epithelial cells and create pores in these epithelial cells. So, due to the creation of the pores in the epithelial cell, the got swelling, and after swelling, it gets lysis. Okay, the cell is got lysis, and after the lysis, it eventually causes the death of the insect. So this is the exact mechanism how the Bacillus thuringiensis is able to kill the caterpillar-like organism. Okay, so this is how we can use the Bacillus thuringiensis to improve the agricultural crop productivity. Okay, now see, the specific Bt toxin genes were isolated from the Bacillus thuringiensis and it is incorporated into several crop plants such as the cotton. जैसे अभी हमने बात की बीटी कॉटन की कि Bacillus thuringiensis से जीन्स निकाले गए हैं और उसको बीटी कॉटन में डाल दिया गया है. Now this बीटी कॉटन plant is resistant to the caterpillar. Okay, the choice of the genes. Okay, कौन सा जीन निकालना है मतलब Bacillus thuringiensis में, जैसे हमने कहा कि बहुत सारी स्ट्रेन्स है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेन मस्किटो को किल करती है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेन फ्लाइज को किल करती है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेन कैटरपिलर को किल करती है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट स्ट्रेन एंड जीन ऑफ दैट स्ट्रेन. ओके, ये चॉइस ऑफ जीन किस पे डिपेंड करता है? दिस चॉइस ऑफ जीन इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट. किसको अटैक करना है? मस्किटो को किल करना है, फ्लाइज को किल करना है, कैटरपिलर को किल करना है, आर्मी वर्म को किल करना है, किसको किल करना है? डिपेंडिंग अपॉन दिस वी हैव द चॉइसेस ऑफ द जीन्स इन द Bacillus thuringiensis. ओके, एज द मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड दिस इज द स्पेशलिटी. ओके, वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं टॉक्सिन. वो मस्किटो को किल करने वाले टॉक्सिन अलग होते हैं, फ्लाइज को किल करने वाले अलग होते हैं, कैटरपिलर को किल करने वाले अलग होते हैं, आर्मी वर्म्स को किल करने वाले अलग टॉक्सिन्स होते हैं. तो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं. तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला जो है इंसेक्ट को हम यूज, कौन से वाले हम जीन को यूज करेंगे Bacillus thuringiensis पे, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला इंसेक्ट किल करना है. ठीक है, तो देखिए ये नेचर में ये बहुत ही सुटेबल ऑप्शंस हमें वहां पे मिलते हैं कि Bacillus thuringiensis का वो जीन निकाल के लाइए जो इस पर्टिकुलर पेस्ट को किल करेगा. ठीक है, तो इस प्रकार से हम पर्टिकुलर पेस्ट के लिए पर्टिकुलर जीन निकाल सकते हैं फ्रॉम द Bacillus thuringiensis, और वैसा ही एक जीन निकाल के कॉटन में डाल दिया गया है जिसे आज फेमसली हम बीटी कॉटन कहते हैं. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द नेम ऑफ दोज जीन्स. ओके, कुछ एक दो जीन्स को हम बात करते हैं. देखिए, द टॉक्सिन एनकोडेड बाय द जीन नेम एज ए क्राई. ओके, इसे क्राई जीन बोला जाता है.
ठीक है. So whatever the genes which are present in the Bacillus thuringiensis which are responsible for the production of toxins, these genes were named as a cry genes. ठीक है, उसे cry genes बोला जाता है. Now the protein encoded by the genes that is cry 1AC then cry 2AB control the cotton bollworms. ओके, कॉटन बॉलवर्म्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द क्राई 1AC एंड क्राई 2AB. ओके, सो cry 1AC and cry 2AB, both these genes produce the toxin which kill the cotton bollworms. ठीक है, तो कॉटन बॉलवर्म्स को किल अगर करना है तो आपके पास कौन से जीन्स होने चाहिए? यू शुड हैव द क्राई 1AC एंड क्राई 2AB. सो व्हेनेवर वी वांट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ cotton bollworm, we should use the cry 1AC and cry 2AB gene from the Bacillus thuringiensis, and that of cry 1AB controls the corn borer. Okay, the third gene which is called the cry 1AB, this gene is responsible for the production of toxin which will control the corn borer insect. ठीक है, ये कॉर्न बोरर इंसेक्ट जो होता है, ये कॉर्न बोरर को किल करने के लिए जो है क्राई 1AB वाला जीन चाहिए. ठीक है, सो cry 1AC and cry 2AB is able to produce the toxin which controls the cotton bollworms, and cry 1AB is able to produce the toxin which will control the corn borer. Okay, so this is how we can use Bacillus thuringiensis in order to control the population of the insect in the agricultural field. So cotton का एग्जांपल है, यहाँ पे corn का एग्जांपल है. ये सारे हमारे क्रॉप्स है जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जर प्रोडक्टिविटी इन्हीं से आती है. तो जो है कॉर्न इसमें फूड पे के तौर पे यूज होता है, कॉटन जो है इस पे लार्जली क्लॉथ इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड है. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द बैसिलस thuringiensis इन द एग्रीकल्चर. ओके, एक बैक्टीरिया को हम एग्रीकल्चर में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, so this is the first application which we have discussed about the application of the microbiology in the agriculture. Now see, the second example is the fungus trichoderma. ठीक है, in the just last lecture we have discussed about the trichoderma, that is it is the free living fungi and found in the root ecosystem. Okay, so we can use this trichoderma in the agricultural field and put them into the root ecosystem so that it can resist the other plant pathogens. Okay, it will resist the other plant pathogen which cause various diseases in the plants, and if we avoid these diseases we can have the optimum yield from this crop field. Okay, so we in the fungus we can use the trichoderma which is a free living fungi and put this free living fungi into the root ecosystem. Okay, एक बार अगर हम उसे रूट इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे काम करेगा, और जो कुछ प्लांट पैथोजन वहां पे होते हैं रूट इकोसिस्टम में जो वेरियस डिसीजेस कॉज करते हैं प्लांट में, उन्हें वो रेजिस्ट करने का काम करेगा. So the important second member which is used in the biocontrol methods is the trichoderma after the Bacillus thuringiensis. Okay, after Bacillus thuringiensis, which is the bacteria, now we have the second example trichoderma which is nothing but the fungi. Okay, trichoderma खुद क्या है? fungi है, and it's a free living fungi which can be put into the root ecosystem which will act as a biocontrol agent to avoid the plant pathogens which cause various diseases in the plants. Okay, now see, the third category of the biocontrol we have for that is the baculoviruses. Okay, so viruses again can be used for the as a biocontrol agent. We have seen the bacteria as a bacteria used for the biocontrol agent. Then we have seen the fungi used as a biocontrol agent. Now we are going to see the virus which will be used as a biocontrol agent. It is named as the baculovirus. It's a genus. Okay, there are many viruses comes under these baculoviruses. Now baculoviruses are the pathogens that attack insects and the other arthropods. Okay, ये किसको अटैक करते हैं? baculoviruses. These attack the insects and the arthropods. ओके, इंसेक्ट को अटैक करते हैं जब ये बकुलोवायरस, मतलब ये एबिलिटी रखते हैं कि इंसेक्ट को किल कर सकते हैं. ओके, सो सी द मेजॉरिटी ऑफ द बकुलोवायरस आर यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स दैट आर इन द जीनस कॉल्ड एज द न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. ओके, ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस से बिलोंग करने वाले जो बकुलोवायरसेस होते हैं इन्हें ही बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है. Okay, now these viruses are excellent candidate for the species specific narrow spectrum insecticidal application. देखिए, इनको excellent एक बात बनाती है बकुलोवायरसेस को कि बकुलोवायरस फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टाइप का बकुलोवायरस लिया तो वो पर्टिकुलर किसी एक ही इंसेक्ट को किल करता है.
ठीक है, बाकी इंसेक्ट को वो कुछ भी नहीं करता है. अगर आप इफ यू टेक द सेकंड टाइप ऑफ द बकिलोवायरस, इट विल किल द अनदर टाइप ऑफ इंसेक्ट एंड लेव द अदर इंसेक्ट एज इट इज. Okay, and if you take the third kind, it will kill the another kind of insect and left out the other insects. So this specificity, this specificity, narrow spectrum of insecticidal applications makes the baculovirus very special, because they can only kill the insect specific, they can only kill the insects which are come in their range. We have already discussed that the viruses has the range, okay, and in that range, if the if there is some insect which is causing havoc in the agricultural field, and if you find a specific baculovirus for this insect, this baculovirus can only kill that insect and leave the other insect as it is. So these baculovirus, due to their species specific activity, make them an excellent candidate as a biocontrol agent. To control the insect pest, by using the biocontrol, we can use the bacteria, that is Bacillus thuringiensis, we can use the fungi, that is Trichoderma, or we can use the viruses, that is the baculoviruses, to control the insects or the arthropods. Now see some more details on the baculoviruses. See, they have no negative impact on the plants. Okay, plants are not get negatively impacted by these baculoviruses, nor the mammals, bird, fish, or even the non target insects. Okay, so there is a no side effect of the baculovirus, no side effect on the other organisms which live there, just like plants, mammals, bird, fish, or even the non-insect target insect are not harmed by these viruses. Only the targeted insect got harmed by the baculovirus. Okay, now see, this is especially beneficial when the beneficiary insects are being conserved for the overall integrated pest management program, or when the ecological sensitive area is being treated. Now see, there are some insects which we have discussed that they are mainly used in the pollination, and in the agricultural field the pollination is very, very important, because without pollination there will not be formation of a fruit, and fruit is the final end product in the majority of the crop fields. Okay, so we have to conserve certain kinds of insect, and we have to kill the certain kinds of insects. So the target specific baculoviruses are able to kill those insects only which are come in their range. Okay, so we can we can have choice in the baculoviruses which virus to take and study their insect range, and according to that insect range we should select the baculovirus, so that it will kill only those insects which are not beneficial for the agriculture, and will conserve those insects which are beneficial for the agricultural field. Right, this is especially desirable when we are treating the ecologically sensitive area. Ecologically sensitive area is that area, if we kill one of the species in such a area, the whole ecosystem will collapse. Right, that is why in such a ecologically sensitive areas we have to take more care. So the insect specific baculovirus can be used to kill the insects which are not useful or not beneficial for the agricultural field. Okay, okay. So till now we have seen microbes as a biocontrol agent in the agriculture. Okay, now the second topic, the very, very important topic, is the microbes can be used as a biofertilizers. Okay, microbes को हम biofertilizer के तौर पर भी यूज करते हैं. मतलब कोई एक लिविंग माइक्रोब होगा, उसको अगर हम एग्रीकल्चर में डाल दे तो वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है. It will act as a fertilizer, and that is why we can use this microbes as a biofertilizer. It will greatly enhance the crop productivity. Okay, nowadays what we use is the chemical fertilizers, but as we came to know now, these chemical fertilizers are giving more harmful effects than the beneficial effects. Okay, now see, the environmental pollution become the major cause of concern. The use of the chemical fertilizer contributed significantly to this pollution. सी, जो भी एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे होता है. देखिए, जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है आज की डेट में, उसके लिए लार्जली रिस्पॉन्सिबल है केमिकल फर्टिलाइजर्स. Now what happens, see, one case study is here. See, if we have this agricultural field, and in that we have pour many chemicals to increase the crop productivity. Okay, so there is a lots of chemical fertilizers present in this agricultural field. Now not all these chemical fertilizers are used by the cropland, so all these chemical fertilizers remain in that particular agricultural field for the next season as well. So whenever there is a rainy season after the harvesting, when there is a rainy season, all these chemicals mix with the rainwater. Okay, all these chemicals mix with the rainwater and they run away to the other places. All these chemicals is taken by these rains to the other places, and these rains generally go to the small rivers. Okay, small rivers तक ये पहुंच जाते हैं, and these small rivers attaches to the
larger rivers, and these larger rivers finally going to the oceans. So from the agricultural field, the chemical is directly transported into the oceans. So in the oceanic ecosystem or in the fresh water, that is the river ecosystem, there are many ecologically sensitive organisms. When they come in a contact with these chemicals, they die. There is death occurs, and one such a problem which is created in the rivers and the ocean is the algal bloom, which is caused due to these chemicals or the eutrophication. जिसे यूट्रोफिकेशन बोला जाता है या फिर उसे अल्गल ब्लूम बोला जाता है, ये इस केमिकल फर्टिलाइजर के यूज करने की वजह से होता है. सो केमिकल फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट बहुत है, एंड इट कॉज द ह्यूज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. So we should avoid these chemical fertilizer and instead use some ecologically friendly fertilizers. Now there are problems associated with the overuse of the chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to the organic farming, that is to use the biofertilizers. अब हम पे प्रेशर बन रहा है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि इकोसिस्टम को हमने बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया है बाय यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स. So we should switch to the organic farming now by using the biofertilizers, because biofertilizers, they can enhance the crop productivity, and on the other hand it does not cause any harm in the ecosystem. So use of the biofertilizer is the need of today, need of time. Okay, so we should replace the chemical fertilizers with the biofertilizers, and microbes can be used as a biofertilizers. Okay, now see which microbes. Now the biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient quality of the soil. मतलब whatever the soil is there, if these organism increases the nutrient quality of the soil, then they are called as the biofertilizers. Okay, these are such organisms which can enrich the nutrient quality of the soil. That is, the nutrient, the pool of the soil is got greatly enhanced by using these organisms. Then in such a condition they are called as the biofertilizers. The main source of these biofertilizers are the bacteria, fungi and the cyanobacteria. Okay, so as a biofertilizer we can use the bacteria, as a biofertilizer we can use the fungi, and as a biofertilizer we can even use the cyanobacteria. All these organisms, all these microbes can be used as the biofertilizers to enrich the soil nutrient quality. See, a very few organisms can utilize the nitrogen in the form of N2. देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे अभी बोला जाएगा कि हाउ वी कैन यूज द माइक्रोब्स which can enrich the soil by giving them a specific nutrients. Now see N2 in our environment, that is the nitrogen. Nitrogen, the percentage of nitrogen in our environment is 78%. You know that, right? 78%, around 28% is oxygen, and rest of the gases are there in the trace amount. So the nitrogen, which is present 78% in the atmosphere, but plants do not have ability to trap this nitrogen directly. That means plants are dependent on the other organisms for the source of nitrogen. Plants do not have ability to trap this N2 directly from the atmosphere. Plants don't have this ability to trap the nitrogen. Now see, very few other organisms other than plants, okay, other than plants, the very few organisms which can utilize the nitrogen in the form of N2, which is abundantly available in the air, which is 78%. Only a certain prokaryotic species are capable of fixing the nitrogen. See, we are talking about the prokaryotic species. When we say prokaryotic, these are largely bacteria. The many bacteria possess the ability to directly utilize the N2 which is present in the atmosphere. So whatever the N2 which is present in the atmosphere, it is directly utilized only by the bacteria or the prokaryotic species, not by the plants. So if the plants require the nitrogen, they are dependent on the prokaryotic species like bacteria, which are microbes, for the nitrogen fixation. So reduction of the nitrogen to the ammonia, okay, that is N2, which is present in the atmosphere, and conversion of this N2 into NH3, that is the ammonia, by the living organism, this process is called as the biological nitrogen fixation. And this biological nitrogen fixation is done by the microbes. This is done by the bacteria, because these bacteria are having the ability to directly trap the atmospheric nitrogen and convert them to the ammonia nitrate or nitrite, which can be used by the plants. Okay, then after conversion of this nitrogen into the ammonia nitrate or nitrite, then these form of the nitrogen can be absorbed by the plant. But the plants cannot directly absorb the N2 from the atmosphere. They don't have this ability. Now who has this ability? The prokaryotic species has this ability, bacteria has this ability. And the conversion of this atmospheric nitrogen into the ammonia by the living organism, this process is called as the biological nitrogen fixation. And this process of biological nitrogen fixation
is carried out by the prokaryotes only, not by the plants. Plants, animals do not have this ability. So you can say that the microbes are responsible for giving the nitrogen in the soil or to the plants. So you can judge that how the microbes are important in the agricultural field, because as a source of nitrogen only there are the bacteria which can provide the nitrogen. See, the nodules in the leguminous plants are formed by the symbiotic association of the rhizobium with the leguminous plant. Okay, so leguminaceae is the family of the plant, right? सेकंड थर्ड चैप्टर में जब हम देखेंगे तो वहां पे फैमिली स्टडी करेंगे हम. लेग्यूमिनस प्लांट्स में नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं इन द रूट्स. ओके, इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स. ऑब्जर्व दिस रूट नोड्यूल्स. These are the root nodules. These root nodules are formed due to their symbiotic association with the rhizobium. Now, rhizobium is the bacteria. So, bacteria is living inside these nodules. Okay, and these bacteria can fix the atmospheric nitrogen into the organic form, which is used by the plants as a nutrients. Okay, so plants उनको nutrient की तरह use कर सकते हैं, but who is giving this nitrogen to the plant? It is given by the bacteria which is called rhizobium, which is in a symbiotic association with the plant. Okay, so other bacteria can also fix the atmospheric nitrogen while in a free living in the soil. See, not all the bacteria form the symbiotic association with the plant. Some bacteria are there which are free living in the soil. They live in the soil as a free living organism, which are called as the azospirillum and the azotobacter. Azospirillum and the azotobacter are such a bacteria which freely living in the soil and trap the atmospheric nitrogen and thus enriching the nitrogen content of the soil. इसीलिए soil में nitrogen content बढ़ जाता है, और soil में जब nitrogen content बढ़ जाता है तो वहां से plant उसको easily absorb कर सकते हैं. तो आप जज कर सकते हो कि देखिए नाइट्रोजन की सोर्स के तौर पे यहाँ पे बैक्टीरिया कितने इंपॉर्टेंट है. Some bacteria form the symbiotic association with the leguminous plant, that is they form the nodules and they fix the nitrogen and give it to the directly to the plants. There are some bacteria like azospirillum and the azotobacter which are free living in the soil and they trap the nitrogen and it trap nitrogen in the soil, and this trapped nitrogen which is present in the soil then can be absorbed by the plants. So the source of the nitrogen for the plants is coming from the bacteria. So how this microbe is useful in providing the nitrogen to the agricultural crops, right? Agricultural crops में लेगुमिनेसी के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि वो हमारे हम उन्हें एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के तौर पे यूज करते हैं. अब इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में जब राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, या फिर अगर हम फील्ड में वहां पे अजोस्पाइरिलम और अज़ोटोबैक्टर डाल दे तो वहां पे सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, और नाइट्रोजन जैसे ही बढ़ जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी खासी होगी. क्योंकि एक बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड दोनों में नाइट्रोजन लगता है. इफ ए प्लांट वांट्स टू क्रिएट द प्रोटीन्स और द न्यूक्लिक एसिड, दे रिक्वायर नाइट्रोजन कंपल्सरीली, एंड दिस नाइट्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोकैरियोटिक स्पीसीज लाइक राइजोबियम और azospirillum and the azotobacter. Just we have discussed that the proteins and nucleic acid cannot be synthesized as a product from the photosynthesis because both these are the biologically critical molecule containing nitrogen. देखिए photosynthesis प्लांट करते हैं लेकिन उसमें वो डायरेक्टली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड नहीं बना सकते हैं, ठीक है. उसमें वो सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसमें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड नहीं होती है. बाद में ये क्रिटिकल मॉलिक्यूल जो है बाद में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं. एंड हु इज प्रोवाइडिंग दिस नाइट्रोजन? दीज आर प्रोवाइडेड बाय द बैक्टीरियाज, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द microbes. Now see, obtaining the nitrogen atoms from the N2 gas, a process is called as the nitrogen fixation, requires the breaking of N triple bond. देखिए नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है. But the prokaryotic species able to break this triple bond, the strong triple bond, because they has the special kind of enzyme with them. Okay, now see this biological nitrogen fixation, it is carried out by the prokaryotes and these are called as nitrogen fixers or diazotropes, and it accounts for the 70% of the natural nitrogen fixation. प्रोकैरियोट जो होते हैं वो 70% ऑफ द नाइट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ट्रैप किया जाता है. उन्हें नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोला जाता है या फिर उन्हें डायज़ोट्रॉप्स भी बोला जाता है. जैसे हमने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सर जो है वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं जैसे राइजोबियम है, या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जैसे अज़ोस्पाइरिलम है या फिर अज़ोटोबैक्टर है. उसी तरह सायनोबैक्टीरिया जो है वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बाय यूजिंग देयर सेल कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट. ओके, यहाँ आप जो देख रहे हो ये
साइनोबैक्टीरिया की पिक्चर है, और यहाँ पे जो लार्जर सेल होते हैं बीच में, ये हेटेरोसिस्ट होते हैं, और इसी हेटेरोसिस्ट सेल का इस्तेमाल करके ये जो प्लांट्स होते हैं ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. So these prokaryotic organisms possess this remarkable ability to trap the atmospheric nitrogen, and these are called as the nitrogen fixers or the diazotrophs, which are responsible for the 70% of the natural nitrogen fixation. Now see, these cyanobacteria are the autotrophic microbes widely distributed in the aquatic and terrestrial environment, many of which fix the atmospheric nitrogen. देखिए ये cyanobacteria का जो ग्रुप है, these are cyanobacteria, these are autotrophic, that is they can prepare their own food. Okay, they are not dependent on the other organism for their food. They are distributed not only in the aquatic environment but also in the terrestrial environment as well, and many of them fixes the atmospheric nitrogen. For example, देखिए एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया एक्सेट्रा. ये एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटोरिया ये सारे के सारे क्या है, साइनोबैक्टीरिया है. ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लैंड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. नाउ सी इन द पैडी फील्ड्स जनरली एक्वेटिक्स में आते हैं, क्योंकि पैडी फील्ड्स हमेशा वाटर के अंदर होती है, इसलिए उसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं. नाउ साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर. वहां पे वो साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर का काम करता है और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है पैडी फील्ड्स में. ठीक है, और इस वजह से पैडी फील्ड्स में अच्छा खासा क्रॉप प्रोडक्शन होता है. नाउ ब्लू ग्रीन algae, which is also called as the cyanobacteria, also add the organic matter to the soil and increase the fertility. उसके साथ साथ वो ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है सॉइल में, क्योंकि जब ये साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन algae की जब डेथ होती है, तो यहाँ पे डेथ होने के बाद ये जो सारा ऑर्गेनिक कंटेंट है ये पैडी फील्ड में मिक्स हो जाता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होने के बाद इसी को प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हाँ देखिए, जैसे हमने कहा कि कैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं ये प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये बहुत हार्ड होता है ब्रेक करना. इवन इन द लैब्स आर्टिफिशियली भी आज इसको ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है. बट द एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड नाइट्रोजिनेज इज प्रेजेंट इन दीज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन व्हिच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन द प्रोकैरियोट्स. सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज द N2 फिक्सर्स, राइट. ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, दिस एंजाइम इज एबल टू ब्रेक दिस नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंड कन्वर्टिंग इट टू द अमोनिया. Okay, so due to the presence of nitrogenase enzyme in the prokaryotes, it is exclusively present in the prokaryotes, and that is why they are able to trap the atmospheric nitrogen. और इसीलिए नाइट्रोजन वो पूरे इकोसिस्टम को अवेलेबल करवा देते हैं, बिकॉज दे हैज द वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजिनेज एंजाइम. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन टिपिकली याद रखिए, ठीक है. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपसे पूछा जा सकता है. एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एग्रीकल्चर यही बहुत कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस में, ठीक है. नाउ देखिए, उसके बाद जब हमने बैक्टीरिया देख लिए हैं जो नाइट्रोजन बढ़ा सकते हैं, उसके बाद जो और हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं वो है फंगाई. और देखिए फंगाई को जब हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स. ये हमने पहले से ही डिस्कस किया है, इसे हम माइकोराइजा बोलते हैं, स्पेशली विद द मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लूम्यूस टू फॉर्म द माइकोराइजी. ठीक है, माइकोराइजी बनाने के लिए ये जो फंगाई होते हैं ये एसोसिएशन फॉर्म करते हैं विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, राइट. अब ये जो फंगल सिम्बायोट होता है, इन दिस एसोसिएशन इट एब्जॉर्ब द फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड इट पासेस ऑन टू द प्लांट. फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके ये प्लांट को देता है, एंड इन रिटर्न हमने डिस्कस किया था शुगर्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो प्लांट किसको प्रोवाइड करता है, फंगाई को प्रोवाइड करता है. On the one hand, the fungus जो है वो प्रोवाइड करता है phosphorus to the plants, और in return plant provides the sugar plus the nitrogen containing compounds to the fungi. Okay. Now see, इसकी वजह से due to this association of the mycorrhiza, the plants having such a association shows the resistance to the root-borne pathogens. तो root-borne pathogens के लिए वो resistance हो जाते हैं. उसके बाद वो tolerance भी ज्यादा दिखाते हैं to the salinity. Salinity is the stress due to the salt water. ठीक है, salt water की वजह से क्रिएट होने वाला जो स्ट्रेस होता है उसे salinity कहते हैं. देन द ड्राउट के लिए भी वो टॉलरेंट हो जाते हैं. उसके बाद ओवरऑल इंक्रीज होती है प्लांट ग्रोथ में और डेवलपमेंट में अगर उनका माइक्रोराइजल एसोसिएशन वहां पे है तो. Okay, so all these are the all these mycorrhiza we can be used as use them as a biofertilizer. Okay, देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर डाल दिया हमने, तो यहाँ से देखिए कैसे ये फंगल हाइफीज निकल रही है और ये प्लांट के साथ एसोसिएशन बना रही है, और एक बार प्लांट के साथ एसोसिएशन बनने के बाद इस प्लांट को उसका अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे होता है. ठीक है, नाउ सी यहाँ पे फिर दो टाइप्स ऑफ कोर्स हमने एक्टोमाइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा दोनों देख लिए हैं.
हमने ये दोनों डिस्कस किए हैं, इसलिए हम फिर से उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्टोमाइकोराइजा भी होता है और एंडोमाइकोराइजा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि माइसीलिया कहाँ तक ग्रो करता है। जब एक्सटर्नल सिर्फ मेंटल बनाता है ऐसे बाहर से, देन इट इज कॉल्ड एज द एक्टोमाइकोराइजा, और जब अंदर पेनिट्रेट करता है सेल के अंदर, कॉर्टिकल सेल के अंदर, तो उसे एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। और वो वेसिकल बनाता है, इसलिए उसको वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजी भी बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया ही है। फर्स्ट में हमने देखा कि हाउ वी कैन यूज द माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। ओके, बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे हमने उनको देखा। सेकंड, वी यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नाउ द थर्ड वन वी आर गोइंग टू यूज एज द सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, we can use them as a single cell protein. Now see what is single cell protein. Okay, this is important. Now more than 25% of the human population is suffering from the hunger and malnutrition. That literally means the food availability in the world is less as compared to what we need. Okay, जितने हमें चाहिए उतना फूड जो है प्रोडक्शन नहीं होता है वर्ल्ड में, एंड 25% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द हंगर एंड द माल न्यूट्रिशन। देखिए, जनरली इट टेक्स 3 to 10 kg ऑफ द ग्रेन्स टू प्रोड्यूस द 1 kg ऑफ मीट बाय द एनिमल फार्मिंग। सी, इफ यू डू द एनिमल फार्मिंग, ठीक है, अगर आप एनिमल फार्मिंग करो और वहां पे अगर हिसाब लगाया जाए कि 1 kg ऑफ मीट बनाने के लिए कितना एनर्जी लगता है या फिर कितना ग्रेन लगता है, तो इट इज नियरली 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1 kg ऑफ द एनिमल मीट। सो इट्स लाइक कि एक तरफ से हम खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। तो 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन्स वेस्ट करने के बाद 1 kg ऑफ मीट वहां पे या फिर 1 kg ऑफ एनिमल प्रोडक्ट वहां पे तैयार होता है। सो ये ऐसा है कि एक तरफ से हम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इन द बैलेंस वी हैव द नेगेटिव वैल्यूज, राइट। नेगेटिव वैल्यूज हमें मिल रही है। देखिए, वहां पे कुछ माइक्रोब्स है लाइक स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। अब देखिए, स्पाइरुलिना और क्लोरेला ये दोनों ही अलगी है, ठीक है। ये स्पाइरुलिना और क्लोरेला दोनों क्या है? अलगी है, विच कैन बी ग्रोन इजीली एंड कैन सर्व एज ए फूड विच इज रिच इन प्रोटीन्स, मिनरल, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। That means literally we can use these microbes, that is spirulina or chlorella, like a food which can take off the pressure from the agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर से बिल्कुल प्रेशर निकल जाएगा अगर हम स्पाइरुलिना और क्लोरेला को ग्रो करना शुरू कर दे, जो बड़ी इजीली ग्रो होते हैं, और दीज फूड्स आर रिच इन द प्रोटीन्स, मिनरल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स एक्सेट्रा। ओके, तो वो सब में रीच होते हैं और इनका हम सीधे सीधे फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्रीकल्चरली अगर इसको हम ग्रो करें तो ये बहुत रैपिडली ग्रो भी होते हैं और इनको ग्रो करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। बोथ दिस एग्जांपल्स आर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। ओके, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को हम सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर यूज करते हैं। सिंगल सेल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग दीज फूड्स। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो इस फूड को क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द सिंगल सेल प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन कमिंग फ्रॉम द सिंगल सेल। और ये रैपिडली ग्रो होते हैं, बहुत क्विकली इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, इसीलिए बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फूड क्वांटिटी तैयार की जा सकती है, एंड दिस कैन बी यूज एज ए फूड। ओके, नाउ सी द सेकंड एग्जांपल फॉर दिस। सी द 250 kg काऊ, ठीक है, अगर एक काऊ को हम देखें और उसका वेट अगर 250 kg है, तो वो नियरली 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक दिन में बनाती है। ठीक है, कितना प्रोटीन बनाती है वो? 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे वो क्रिएट कर सकती है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड द 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब 250 ग्राम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मिथैलोफाइलस एंड मिथैलोट्रोपस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर इसका 250 ग्राम की अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम ले, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस द 25 टन्स ऑफ प्रोटीन इन द सेम टाइम। कितना बनाता है वो? 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। तो आप समझ सकते हो कि 250 kg की काऊ जो होती है वो 200 ग्राम प्रोटीन बनाती है एक दिन में। लेकिन अगर सिर्फ 250 ग्राम के हम बैक्टीरियाज ले ले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ले ले, फॉर एग्जांपल मेथैलोफाइलस या फिर मेथैलोट्रोपस, तो ये 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स बना सकते हैं विद इन दैट सेम टाइम पीरियड। तो आप समझ सकते हो कि इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर से कैसे प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोब्स के पास हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन होता है, ये बहुत जल्दी क्विकली मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रोथ इनका बहुत स्पीड से होता है, इसीलिए ये बहुत जल्दी प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो ऑन दी वन हैंड अगर 250 kg के काऊ बस 200 ग्राम ही प्रोटीन एक दिन में बना सकती है, तो ऑन दी अदर हैंड 250 ग्राम के सिर्फ बैक्टीरिया अगर हम ले ले तो वो 25 टन्स ऑफ प्रोटीन बना सकते हैं विद इन द सेम टाइम पीरियड। सो दिस कैन बी अगेन यूज टेक ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ये एप्लीकेशन है एक माइक्रोबायोलॉजी का जो एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर से प्रेशर निकल जाएगा। All right. So both these example, chlorella and spirulina, and then methylophilus and methyllotropous का example आपको क्या करना है, याद रखना है। So all these are the applications of the microbiology in the agriculture. Okay.